ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ, ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ICBC ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਧਾਮੀ ਨਾਰੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 604-864-6131। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗਰਗ ਨਾਲ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗਰਗ ਤੋਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Thank you. Very happy to be here. Welcome. And first of all, congratulations for the wonderful conference, because I happened to be there, saw the kind of enthusiasm and the professionalism which was seen over there for all those 5 days. So congratulations for that. Thank you. It was a wonderful event and I'm really thankful for everyone who made it possible. Right. So Dr. Sahab, the question that arises is कि जब आपने इसको plan किया था, क्या आपने expect किया था कि इतनी successful होगी ये? Well, you always plan big, right? But you always afraid or fearful that something might go wrong, right? Right. But on all targets, we exceeded all our targets. So it's really very satisfying. We were hoping maybe 60 or 70 or 100 people will come. Right. There were about 200 people who registered for the conference. Right. And for the banquet, because we really wanted to bring the message of reverse innovation by bringing Pavi Mehta, we thought maybe 200 will come. Right. We had 550 leaders from the community. Wonderful. So it's really very satisfying. Absolutely. It was very gratifying to see that all the professionals coming together and talking and discussing about what can be done, That's right. how Canada and India both can correlate and something concrete can be done. Yeah. So उस संबंध में हमें बताइए कि जो आपने डिवाइड किया था कॉन्फ्रेंसेस को अलग-अलग तरीके से किया था, उन कॉन्फ्रेंसेस में पहले तो क्या-क्या आपने ऑर्गेनाइज किया और कैसे उनकी जो लोगों की एक्सपर्टीज थी उसका बेनिफिट मिला? बिल्कुल। तो हमने जो 2010 में कॉन्फ्रेंस किया था, उसका एक फोकस था कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। राइट। तो जैसे वो डेवलप हुआ आइडिया, तो लगा कि हेल्थ जो है वो बड़ी है, उससे भी केवल कार्डियोवैस्कुलर से भी। राइट। तो हमने इसका थीम था हेल्थ एंड सिविल सोसाइटी। राइट। सिविल सोसाइटी में आपको जैसे मालूम है कि जस्टिस, एजुकेशन एंड हेल्थ आर द पिलर्स। तो हमारा विज़न था कि ये सिविल सोसाइटी के जरिए हेल्थ को कनेक्ट किया जाए, तो वो पूरा विजन था। उसमें हमने कहा कि 4 टॉपिक्स लेंगे। तो पहला टॉपिक था जैसे कि जो हेल्थ को प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस और ब्रॉड एरिया ऑफ अलाइड हेल्थ। तो देयर इज़ ए रियल नीड कि अलाइड हेल्थ की ट्रेनिंग के लिए। तो पिछले 4 साल से हम पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। BCIT जो कि अपना प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो उनको एडवाइस कर रहा है। तो एक सेशन हमने उस पर बनाया। ठीक है। वो एजुकेशन और हेल्थ को कंबाइन करने के लिए। एक बनाया इकोनॉमी एंड हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी यूज़ होती है हेल्थ में, वो दिस इज़ इकोनॉमिक ड्राइवर। राइट। परंतु लोग उसको डॉट्स को कनेक्ट नहीं करते हैं। तो हम वो सेशन बनाया हेल्थ, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। एंड उसमें और भी ये था कि इंडिया में भी बहुत प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी में, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। Everybody has cell phone there, so the communication. So we thought we'll bring experts to talk about technology, how it affects health, and how it is an economic driver. So that was second session. The third session, which is very critical, as we were talking earlier, वो है chronic disease management and primary care. ठीक। तो British Columbia, through government of BC, Ministry of Health, doctors of BC, all the regional health authorities, Fraser Health,
divisions which have been created Right. have a very unique model. ठीक तो हमने सोचा कि we should show it to the world Right. how good a system we have here and what India has Right. and can we learn. So the Absolutely. whole session was designed on primary care. Very successful session. I was real worried about it because as we started to plan, some 15 to 20 speakers were assigned. Okay. And I said, how are we going to manage Accommodate time? them, right. But it went out well, and I think I'm very happy about that. Right. And the last session, which is my most favorite, is how we bring back holistic medicine. Right. So we start to think of total body through ancient wisdom Right. of yoga and Ayurveda. So we brought two experts, one from New Jersey, Virginia Polytechnic, Dr. Innes, who has done fair amount of research on cardiovascular metabolic diseases Right. and yoga. एंड एक इंडिया से आए थे जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट है निम्हास मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन Right. प्रीमियर इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूट उनमें काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया है Right. डिप्रेशन एंड रोल ऑफ योगा Absolutely. एंड देन अपने डॉक्टर लक्ष्मी याथम जो कि इज अ प्रोफेसर Right. एंड दे केम विद अ फुल फोर्स ऑफ psychiatrists, psychologists. Right. So we had a good discussion on that as well. Right. So in 4 those were the sessions. एंड हमने डिज़ाइन किए थे ये सब सेशन पहले से ही जी। कि क्या recommendations के इनकी नेक्स्ट स्टेप हो सकते एब्सोल्युटली हैं। फर्दर क्या किया जाए Yeah. इसके अंदर, और वो इसके अंदर जब बातें हुई और उसके अंदर एक जो चीज़ देखी गई कि इंडिया का जो एक्सपर्टीज़ है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स बिकॉज देयर आर मोर पेशेंट्स देन कनाडा, Yeah. बट कनाडा का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और जो हाई लेवल की असेसमेंट लेवल्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये जब तालमेल होगा तो उससे डेफिनेटली Yeah, रिजल्ट्स बिल्कुल, बेहतर आएंगे। yeah. यू ऑल्सो साइन सम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ऑल्सो, वो कौन से हुए? तो हम लोग मेमोरेंडम्स का मतलब यही है कि हम कैसे लोगों को आप साथ लाएं। राइट. तो जैसे कि 2010 में एक आइडिया था जो इंडिया से आया था जी। कि कैसे क्रॉनिक डिसीज़ को बेस्ट मैनेज किया जाता है। ठीक। तो हमने सर्वे किया था थ्रू इंडियन डेलीगेट्स, तो उनका फीडबैक था कि जो पेशेंट है वो अभी भी ये कहते हैं कि उनका एक अपना डॉक्टर होना चाहिए। राइट. परंतु डॉक्टर के पास समय नहीं है, तो उसका वो कहते हैं कि अगर फैसिलिटी मिले जी। तो लाइक डाइट काउंसलिंग, एक्सरसाइज काउंसलिंग, जस्ट अबाउट लाइफ स्टाइल, बिहेवियर काउंसलिंग, Right. peer review, knowledge, so each one sharing their knowledge is very important. राइट. तो उन्होंने कहा कि अगर इंडिया में वो क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर है लेकिन दे यूज डिफरेंट पीपल टू प्रोवाइड दिस, यू नो, Right. जैसे ओल्ड एज में जो होती थी ग्रैंड मदर, ठीक। वो कहते हैं ग्रैंड मदर इज द बेस्ट डॉक्टर फॉर यू, Absolutely. शी nudges you, she takes care of you, Right. and as industrialization is taking place we are losing that. That's right. So idea is to create a physician who Right. is your primary doctor, but support that doctor with all this knowledge. Right. So that idea came, and I'm very happy to share with your viewers the Fraser Health राइट. division of family practice. यहाँ पे very innovative divisions create किए गए हैं। जी। तो यहाँ पर है सरी एंड नॉर्थ डेल्टा डिवीजन। Right. वो दोनों ने बहुत इंटरेस्ट लिया इसमें कि ये Right. इसको आगे बढ़ाया जाए। एंड एब्सोल्युटली, एंड आपकी भी अनथक मेहनत जो है उसके कारण साउथ एशियन हेल्थ सेंटर जो है वो भी कायम हुआ। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद कि जो ये अब साउथ एशियन हेल्थ सेंटर भी आपने जो कायम किया, जो कि ऑलरेडी इन प्रैक्टिस है, और ख़ास तौर के ऊपर जो रिकमेंडेशंस आपके इन सेशंस में से आई, इन फ्यूचर हाउ यू ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट देम एंड हाउ कैन द कॉमन पब्लिक ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दैट। Yeah. विल कम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एंड डिस्कस अबाउट दिस। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਐਲਨ ਗਲਾਸਰ, ਜੋ CKNW ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 6 ਵਜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਯੂਨਿਟ 101 8035 120 ਸਟਰੀਟ ਡੈਲਟਾ, ਕਾਲ 604 596 1774। ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗਰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਨਾਲ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ।
So Dr. like before the break we were talking about the South Asian Health Center. इसके बारे में बताइए। Yeah. ये आपका एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव है क्योंकि ये कनाडा भर में पहला, बल्कि नॉर्थ अमेरिका में मैं कहूँगा कि पहला ऐसा यूनिट कायम किया गया जिसके अंदर के साउथ एशियन हेल्थ सेंटर का नाम दिया गया और उन्हीं को केटर किया जाएगा। सो व्हाट इज इट एंड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए मच ब्रॉडर एंड जॉइंट इनिशिएटिव। Right. मेरा रोल तो बहुत मिनिमम है जी। कि आइडिया क्रिएट किया गया, लेकिन जो असली काम है जी। वो है फ्रेजर हेल्थ प्राइमरी केयर प्रोग्राम Right. एंड डिवीजन ऑफ सरी नॉर्थ डेल्टा। Right. तो पूरा क्रेडिट जो है वो उन लोगों को है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि ये हो रहा है। बीज आपने ही बोया और वो स्प्राउट हुआ। We just had the opportunity Right. to do that. Wonderful. And also, there are lots of other initiatives already underway. जी. So we are working with them. Okay. Another initiative is at UBC, ICON and He Health Strategy. Right. And Dr. Kendall Ho and Dr. Chima are working very hard on this. Right. So we are also working with them. Right. So idea is to work with everyone Right. and wherever possible create synergy. Right. So this South Asian Health Center, जो कि Fraser Health Primary Care Program and Division of Family Practice Surrey and North Delta जी। का joint project है। इसका आइडिया है कि जो chronic diseases स्पेशली कम्युनिटी में होती हैं उसको किस तरह से अच्छी तरह से बढ़ाया जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए। Right. तो जर्नल थीसिस इज कि दो डॉक्टर ट्रीट करते हैं, पेशेंट का उनका रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़रूरी है। Right. तो ये center still has that doctor and then doctor has support of allied health people, Right. about other multidisciplinary people and culturally sensitive knowledge base. Right. So we will have like dietitian, physiotherapists and other people and nurse practitioners. Right. Because nurse practitioners are very informed and they can provide time Right. and knowledge which sometimes is not available. With the doctors, absolutely. Yeah, There's a paucity of time, definitely. These nurse practitioners can play a very important role in disseminating information from the doctor as well as from the patient. Yeah, So it's a kind of a middle way Yeah, between the doctor and yeah. the patient. And it's a teamwork. Right. The idea is to have a teamwork with some focus ठीक. and some leadership. Right. The other aspect of it is, and we have some very good administrative people who are very dedicated. Without them, we cannot do anything. So Right. we're very fortunate to have a team of people who really want it to succeed. Right. And other thing is community engagement. जी. Because we'll be, just imagine if we have group of 10 or 12 community patients and their families discussing what do you eat, how Right. to eat, Right. what is good food, Right. and that will then have a impact, you know. So ये एक नोडल सेंटर बन गया आपका 68th और किंग जॉर्ज हाईवे सरी में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें का किचन भी शायद वहाँ पे एक बनाया Yeah. गया, जहाँ पे कैसे हेल्दी कुकिंग करनी है और कैसे प्रिवेंशन एंड अगेन एक मौका मिलेगा सबको इकट्ठे बैठ के बातचीत करने का। एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि लोग बाग जब उनको पता चलता है, not only professionals but other people also, but especially professionals, they're very excited about it. Right. They're coming up with new ideas. Right. आपने जो वीडियो देखा होगा जो वो किया था बैंक्वेट पर, उसमें प्रोफाइल किए थे सब लोग। So I think hopefully it will act as a catalyst. Right. And मेरा जो होप है कि ये जो आइडिया है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि हम लोग एक तो इवेलुएट करें इसको कि इसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक। फिर have some evidence. Right. And if it works, then maybe it could be broadened in other areas as well. Absolutely. Right. Absolutely. It's only through relationships things can develop, and you provided a ground for that. And congratulations once again, Dr. Garg, क्योंकि वहाँ पे जाके कॉन्फ्रेंस में सुनने को, देखने को जो कुछ मिला वो वाकई में एक माइलस्टोन है, और आस करते हैं कि आने वाले समय में ये और प्रोग्रेस हो और ऐसी और कॉन्फ्रेंसेस हो के इंडिया और कनाडा के विचकार जो रिलेशंस हैं और बेहतर हों, और यहाँ पे भी उसका हमें इम्पैक्ट बेनिफिट मिले और इंडिया में भी जो लोग हैं उनका बेनिफिट मिले। थैंक यू एंड बेस्ट। Thank you very much.